Hello friends, this is Kunal Shangani welcoming you all in this channel. आज हम बात करेंगे how a company become the $1 trillion market capitalization company without having its own product. I am talking about company जिसके products मैं आप हम सब रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं. I am talking about the company who produces or manufactures products like Pepsi, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew in India. I am talking about Varun Beverages Limited. On May 10, 2023, Varun Beverages became the latest company to join the elite group of companies who has market cap of $1 trillion in India. But a company who started its operation in 1995 achieved this feat without inventing a product of its own. How? कैसे? Let's find out in this video. मेरे को हमेशा एक क्वेश्चन रहता था कि द प्रोडक्ट्स लाइक पेप्सी, मिरिंडा, 7 अप ये कौन बनाता है, कौन सी कंपनी है इंडिया में ये सब प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है. देन आई केम टू नो दैट वरुण बेवरेजेस इज अ कंपनी हु प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर्स और डिलीवर्स द दिस प्रोडक्ट्स इन इंडिया and many countries. We will discuss later in this video. So, Varun Beverages is an Indian public limited company. Varun Beverages is a subsidiary or part of RJ Corporation Group. RJ Corporation Group is a conglomerate which involved in businesses like beverages, quick service restaurants, dairy farms, and healthcare. Varun Beverages got or granted has was granted the rights or the franchisee rights to manufacture or distribute the products or the popular brands or beverages brands of PepsiCo. मीन्स उनको लीज या उनको राइट मिला है, हक मिला है कि वो पेप्सिको जो कि एक अमेरिकन जाइंट है उसके पॉपुलर जो बेवरेजेस के ब्रांड्स हैं वो इंडिया में प्रोड्यूस कर सके और डिस्ट्रीब्यूट कर सके. दे गॉट दिस राइट. इसी मॉडल को कहा जाता है फ्रेंचाइजी बॉटल मॉडल. इस मॉडल में एक कंपनी दूसरी कंपनी को राइट देती है कि आप हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारा जो भी वो ट्रेडमार्क रहेगा. लाइक पेप्सिको के जो ब्रांड्स हैं, पॉपुलर ब्रांड्स हैं, वो ट्रेडमार्क पेप्सिको का ही रहेगा. द वरुण बेवरेजेस और द फ्रेंचाइजी कंपनी गॉट द राइट टू मैन्युफैक्चर एंड यूज द ट्रेडमार्क ऑफ और द यूज द रेपुटेशन मीन्स ऑफ पेप्सिको और द फ्रेंचाइजर हु इज गिविंग दैट राइट वो यूज़ करे और मैन्युफैक्चर करे और डिस्ट्रीब्यूट करे प्रोडक्ट्स इंडिया में. सो दे गॉट दैट राइट. अभी जब भी आप ग्रोसरी स्टोर में या किराना स्टोर में पेप्सी की ब्रांड देखोगे या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक देखोगे तो इट वॉज नॉट पेप्सिको हु ड्रॉप्ड ओवर देयर. इट वॉज वरुण बेवरेजेस हु मैन्युफैक्चर्स एंड डिलीवर दैट प्रोडक्ट इन दैट स्टोर. सो माइंड इट. नाउ लेट्स टॉक मोर अबाउट वरुण बेवरेजेस एंड उसके प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं. सो कमिंग टू कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक्स उसमें दे प्रोड्यूस पेप्सी, मिरिंडा, 7 अप, माउंटेन ड्यू. टॉकिंग अबाउट नॉन कार्बोनेटेड बेवरेजेस उसमें आ जाते हैं ट्रॉपिकाना फ्रूट जूसेस, ट्रॉपिकाना स्लाइस एंड मैनी मोर. उनका डेयरी प्रोडक्ट्स भी है उनके पास. पेप्सिको का एक वाटर ड्रिंक ब्रांड भी उनके पास है, एक्वाफिना ड्रिंकिंग वाटर ब्रांड भी वो प्रोड्यूस करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंडिया में. ये सब सारे प्रोडक्ट्स दे वॉज ग्रांटेड द राइट टू प्रोड्यूस दीज ऑल प्रोडक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट दीज प्रोडक्ट्स इन इंडिया. ये सब हो गया प्रोडक्ट्स के बारे में. येस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट VBL और वरुण बेवरेजेस लिमिटेड दे जनरेटेड around 70% of revenue from carbonated soft drinks and rest from non-carbonated beverages and dairy. In the rest of the products, they generated remaining revenue. But majorly they generated revenue from carbonated soft drinks. And their revenue depend upon the season. In summer, the sales are high, but in other means it more depends upon the season. And yes, now because of this franchisee right, they gain the access of popular brands. जो भी अभी पेप्सिको के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो बेवरेजेस प्रोडक्ट्स हैं, वो सब का मार्केट बेस एकदम कस्टमर बेस अच्छा है, मार्केट प्रेजेंस एकदम स्ट्रॉन्ग है. तो वरुण बेवरेजेस दे नाउ only need to invest or need to invest heavily on
manufacturing and distribution channels. Similarly, they invested high or heavily on manufacturing and distribution channels because they got the formula from PepsiCo. उनको formula सब marketing वो help सब उनको मिलता है PepsiCo से, तो they only concentrate on manufacturing and distribution channels. Because of this, VBL currently now have 31 factories across India. And in 1997, the chairman and the promoter of Varun Beverages Limited got the International Bottler Award in 1997. Now, talking about the market expansion of VBL Limited, after gaining or after testing lot of success, they pursued for market expansion. VBL pursued for market expansion. One of the notable examples are in 2018, they acquired a local beverage company called SMV Group. SMV Group got the right from PepsiCo, PepsiCo, an American giant. They got the right from PepsiCo to distribute the PepsiCo brands in South and West regions of India. But in 2018, Varun Beverages acquired SMV Group. Now they got the rights to distribute PepsiCo brands in South and West regions of India. Because of this, now VBL has a right to sell or distribute PepsiCo brands across 27 states and 7 union territories of India. Because of this, and other in 2022, means recently, you can say, they got the right or they enter in one agreement with PepsiCo to manufacture and distribute one of the PepsiCo's brand only, like Kurkure Puffcorn. Now they have got the right. Means suppose if I am an Indian distributor or a seller or I am a owner of a kirana store, तो मुझे बेवरेजेस के लिए वरुण बेवरेजेस को बात करना पड़ेगा. लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए मुझे वीबीएल के पास जाना पड़ेगा एंड कुरकुरे एंड अदर्स वेफर्स के लिए मुझे पेप्सिको के पास जाना पड़ेगा. तो ये डिफिकल्टी आई एम गोना फेस एंड आई विल फेस और आई एम गोइंग टू फेस. सो डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए वीबीएल ने एक एग्रीमेंट में एंटर हुए विद पेप्सिको कि आप हमें ये राइट दो कि हम ये भी सेल करें. तो इट विल बी वेरी इजी फॉर इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर और इंडियन स्टोर ओनर टू डील विद इट. ना मुझे एक के पास जाना पड़ेगा, मुझे एक के पास ही दोनों प्रोडक्ट्स मुझे अवेलेबल है. सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर इंडियन सेलर और स्मॉल स्केल बिजनेसमैन. नाउ ये हो गया मार्केट एक्सपांशन. तो मीन्स इन दिस वे दे एक्सपांड देयर मार्केट, दे ग्रो बेटर. Now talking about the financials of the VBL, as I said, it is a public company, so it listed on National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange in the year 2016. After listing, उनको थोड़ा लॉस फेस हुआ, शेयर प्राइस वॉज डाउन, बट रात गई बात गई. इन पास्ट 5 years उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिखाया है और शेयर प्राइस में भी अच्छा उछाल आया है, अच्छा ग्रोथ आया है. टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यू, 85% ऑफ द पेप्सिको रेवेन्यू जनरेटेड बाय द VBL. सो इससे हम अज्यूम कर सकते हैं कि कितना डिपेंडेंस है पेप्सिको का, कितना डिपेंडेंस है ऑन VBL. मीन्स वी कैन से दैट वी कैन रिलेट बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर, बट VBL generated 85% sales of PepsiCo. So this is a huge number. ये हो गया revenue. And if you talk about the revenue of VBL over the past 5 years, it increased by 20%. And talking about the profit after tax, it increased 50% over the past 5 years. Sorry. और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उन्होंने भी अपना कॉन्फिडेंस 8% से इंक्रीज किया है. मीन्स 8% होल्डिंग्स बढ़ी है फॉरेन इन्वेस्टर्स की. तो इसी को देखकर रिटेल इन्वेस्टर्स की भी इन्वेस्टमेंट बढ़ी, बिकॉज दे आर सीइंग कि फॉरेन इन्वेस्टर्स या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो दे ऑल्सो पुट देयर फेथ इन VBL कंपनी एंड दे इन्वेस्टेड द मनी, देयर वैल्यूबल मनी इन VBL. सो एट द एंड यू कैन से द फाइनेंशियल्स आर वेरी गुड. कैश फ्रॉम ऑपरेशंस भी 25% से इंक्रीज हुआ है. डेट टू इक्विटी रेशियो भी कम हुआ है ओवर द ईयर्स. सो टू कंक्लूड दैट आई कैन से फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, फाइनेंशियली और फंडामेंटली कंपनी वेरी स्ट्रॉन्ग है. स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं हम लोग. एंड यस, अभी आफ्टर सम टाइम सो पेप्सिको गॉट द राइट, सॉरी नॉट पेप्सिको, VBL और वरुण बेवरेजेस लिमिटेड गॉट द राइट टू डिस्ट्रीब्यूट पेप्सिको ब्रांड्स in countries like Sri Lanka, Zimbabwe, Zambia and Nepal.
As I said initially in the video that they manufacture and distribute beverages in India as well as many countries. So these are the foreign countries where VBL distribute products. So VBL generated 80% of revenue from India and Sri Lanka. India and Sri Lanka, and 20% of revenue generated from Zimbabwe, Zambia, and Nepal. This is a uh, breakdown of revenue in term in location or between locations or between countries. And as I said, that 70% of the revenue they generated from carbonated soft drinks like Mirinda, Pepsi, but their revenue is hugely or largely dependent on the seasons. In summer season, the revenue is high, demand is high, but in other reasons like rainy and winter, sales fluctuates little bit. So it at the end it depends heavily on season. So this is all about Varun Beverages Limited. अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.